Now we kept. ये स्विम अप, डायरेक्ट स्विम अप दिखा रहे हैं मैडम. We kept हाँ. this for half an hour. You can see the Yes. haziness in the media Yes, part. yes, yes. These are only motile sperm which have swim up from the semen. Good. So now you're going to. Now what I will do, I aspirate. Aspirate this upper part very carefully without mixing the interface. बहुत बढ़िया. Now I keep a conical tube and centrifuge this part. I just want to. Why you want to centrifuge it, madam? To make it more concentrated. We have kept this for direction in two portions. This is the second tube, you can see. And two tubes में इसलिए रखते हैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा एरिया मिल नंबर ऑफ जाएगा, स्विम्स आपको ज़्यादा मिल ज़्यादा जाएगा. मिल जाएगा. Better This selection. was a very good sample. We could have kept only in one tube. Right. So दोनों सीमन आपने दोनों इसी पेशेंट का है तो दोनों ट्यूब से आपने एक ही में डाल दिया. Now what you, one second, I take out the air bubbles. Correct. Now what we have taken in this tube, these are only motile sperm, only motile sperm, and we'll now centrifuge it Okay. to concentrate. All right. The advantage of this method that you are centrifugating only once, and what you are centrifugating, they are only Motile sperms. without debris, without dead sperm, without centroplasm. Very good. In fact, this is your practice to do all your ज़्यादातर आप जो Semen हाँ, their in their IVF. normal range, we use this method to prepare for Perfect. IVF. ठीक है. In fact, the rationale of this thing is that the sperms are not exposed to centrifugation much. Only once. हाँ, only- Otherwise, with other methods, we have to centrifuge twice. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सुषमा वैद आपको डायरेक्ट स्विम अप के बारे में बताएंगी कैसे करेंगी ये. जी मैम. So the patient is for IVF. The semen parameters are absolutely normal. What we do in direct swimmer, we take 2 ml of culture media in a tube, in a round bottom 14 ml tube. Now we take the semen specimen. This is semen of the patient. नहीं मैम जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करेंगे. अच्छा. So what I will do, Directly underlay. I am going in the tube at the bottom. Bottom. And now I release, ejaculate gradually. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. डॉक्टर सुरभि कैसा लग रहा है? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है. मैडम नीता, You have to do your hand has to be very lay steady. down very slowly so that your media and ejaculate is not mixed. Good. Now I will keep this 37 degree 30 centigrade. for half an hour. The motile sperm, good motile, they will come swim up, and we can see later the cloudy or the haziness in the upper part of the media. ठीक है, बढ़िया. मैम उस दिन हमने डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड किया था. हाँ. नीचे व्हाइट कलर का फ्लेकी सा पैलेट मेरे में भी बचा था जो आप इनके में कह रहे थे. जैसे मैम आप कह रहे थे कि जैसे ये वाला पेशेंट है, इसके साथ खाली 7 एग्स आए हैं, तो इस पेशेंट के में तो आप सभी के लिए एक्स ही करोगे ना, सभी एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए एक्स ही करेंगे. ठीक है, So ठीक the है. eggs play करेंगे और we have already denoted all the eggs are mature. Okay, all eggs are mature. That's congratulations.